हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हम ग्रुपिंग ऑफ सेल के टॉपिक को फिनिश कर चुके हैं एंड आज की वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ सेल। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक। So the first problem we have is a cell of EMF 1.1 volt and internal resistance 0.5 ohm is connected to a wire of resistance 0.5 ohm. Another cell of the same EMF is connected in series but the current in the wire remains the same. Find the internal resistance of the second cell. So हमारे पास cell की EMF है 1.1 volts. We have EMF equals to 1.1 volts and internal resistance equals to 0.5 ohm. And इसी cell का internal resistance कितना है 0.5 ohm. And resistance of wire is 0.5 ohm. So total EMF कितनी हो जाएगी इस केस में? Total EMF equals to 1.1 volts and total resistance equals to let it be R equals to internal resistance plus resistance of wire, that is 0.5 plus 0.5 ohm, that is 1 ohm. So इस केस में करंट कितना आ जाएगा? करंट होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. So EMF we have is 1.1 volts and resistance is 1. So इस केस में करंट कितना आ गया? 1.1 amperes. Next, another cell of the same EMF is connected in series but the current in the wire remains the same. अब एक और सेल को जिसकी EMF 1.1 वोल्ट के इक्वल है उसको सीरीज में लगा दिया गया विद दिस सेल और इस केस में करंट सेम है थ्रू वायर. सो हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड सेल. सो सेकंड केस में क्या हो रहा है? वी हैव टोटल EMF इक्वल्स टू, अब दोनों सेल्स की EMF ऐड हो जाएगी, दैट इज 1.1 प्लस 1.1 इक्वल्स टू 2.2 वोल्ट्स एंड टोटल रेजिस्टेंस विल बी लेट इट बी R. कितना हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड सेल जो हमें फाइंड करना है एंड लेट इट बी स्मॉल r. तो इस केस में टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 प्लस स्मॉल r. हेयर स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड सेल जिसको हमने सीरीज में लगाया विद द फर्स्ट सेल. सो दिस इज 1 प्लस r ओम. नाउ करंट कितना हो जाएगा इस केस में? टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 1 प्लस r और करंट कितना गिवन है? 1.1. उन्होंने कहा है ना दैट करंट इन द वायर रिमेन्स द सेम. हेंस इस केस में भी करंट कितना हो जाएगा? 1.1. तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2.2 इक्वल्स टू 1.1 प्लस 1.1 r. So we have 1.1 equals to 1.1 r. So we get internal resistance of second cell equals to 1 ohm. Now second problem says that two cells of EMF 1.5 volt and 2.0 volt having internal resistance 0.2 ohm and 0.3 ohm respectively are connected in parallel. So we have two cells जिनकी EMF given है and internal resistance भी given है and दोनों को parallel में connect किया हुआ है. We have to calculate the EMF and internal resistance of the equivalent cell. So let's solve this problem. Now in case of parallel combination we know that equivalent EMF होता है E equals to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 के इक्वल एंड जो इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है इक्वल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. बस हमें इन दो फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है, सभी वैल्यूज गिवन है. सो वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. सो पहले इक्वलेंट EMF निकाल लेते हैं. Now E1 is 1.5 volts and E2 is 2 volts. Let it be E1 and let it be E2 and this is R1 and this is R2. Now substituting values we have 1.5 into 0.3 because E1 is 1.5 and R2 is 0.3.
plus E2 is 2 into R1 is 0.2 divided by R1 plus R2, and this is 0.2 plus 0.3. After solving, you will get equivalent EMF equals to 1.7 volts. Now equivalent resistance, internal resistance, here R1 is 0.2 and R2 is 0.3 upon 0.2 plus 0.3, and on simplification this you will get internal resistance equals to 0.12 ohms. Now moving to third problem. Three identical cells each of EMF 4 volt and internal resistance small r are connected in series to a 6 ohm resistor. So तीन cells given है जिनकी EMF 4 volt and internal resistance is small r. इन तीनों को series में लगाया गया to a resistor of resistance 6 ohm. If the current flowing in the circuit is 1.5 amperes, we have to calculate the internal resistance of each cell and terminal voltage across the cell. So let's solve this problem. सबसे पहले circuit diagram draw कर लेते हैं इसका. So we have three cells of EMF 4 volts in series to a resistor of resistance 6 ohm, and इनका internal resistance है तीनों का equals to small r. This is a resistor of resistance 6 ohm, and इन तीनों cells की EMF is 4 volts. अब क्योंकि तीनों सेल सीरीज में है तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा सर्किट में? टोटल ईएमएफ इन तीनों के ईएमएफ के सम के इक्वल होगा, दैट इज 4 + 4 + 4 इक्वल्स टू 4 × 3, दैट इज 12 वोल्ट्स. एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट में? इन तीनों सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का सम प्लस दिस रेजिस्टेंस. सो दिस इज 6 + R plus R plus R, because we have three cells. So this is 6 + 3R ohms. So current आ जाएगा यहाँ से I equals to 12, that is total EMF upon total resistance in the circuit, and current हमें given है equals to 1.5 amperes के. अगर इसका डेसिमल हटा दें तो we have 15/10, so this is 3/2. Now cross multiplying this we have 24, 18 plus 9R. Now taking common, dividing by 3. Here we have 8, here we have 6, here we have 3. So we have 8 equals to 6 plus 3R. So ये 6 इधर जाके subtract हो जाएगा. So we have 2 equals to 3R. So we have internal resistance equals to 2/3 ohms. तो तीनों cells का internal resistance कितना आ गया? 2/3 ohms. Now in second part, this is first part. In second part we have to calculate terminal potential difference across each cell, and this is equals to EMF of each cell minus current through each cell into internal resistance of each cell. Now EMF is 4, current is 1.5, and internal resistance अभी निकाला equals to 2/3. Now after solving you will get this terminal potential difference equals to 3 volts. Now moving to last problem of this video. It says that 12 cells each of EMF 1.5 volt and internal resistance 0.5 ohm are arranged in m rows, each containing n cells connected in series as shown. तो इस सर्किट डायग्राम में वी हैव m रोज एंड हर रो में n सेल्स को सीरीज में लगा रखा है, एंड हर सेल की EMF इज 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम. वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ n एंड m. सो हमें नंबर ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करनी है, फॉर विच दिस कॉम्बिनेशन वुड सेट मैक्सिमम करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 ओम. So हमारे पास external resistance की value भी given है, and this is a case of mixed grouping, and we have to find the value of n and m. So what is given? We have EMF of each cell equals to 1.5 volts
and internal resistance of each cell equals to 0.5 ohm, and external resistance is also given, that is capital R equals to 1.5 ohm. और क्या given है? We have total number of cells, that is 12 cells. इसको कैपिटल एन लेट कर लेते हैं. दिस इज इक्वल्स टू 12. सो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि एक रो में कितने सेल्स कनेक्टेड हैं इन सीरीज, एंड हमें नंबर ऑफ रोज भी निकालनी है. नाउ वी नो दैट क्योंकि m रोज हैं और हर रो में n सेल्स को कनेक्ट किया गया सीरीज में, सो जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे? m इंटू एन के, एंड टोटल नंबर ऑफ सेल्स वी हैव इज 12. नाउ मिक्स ग्रुपिंग के केस में जो करंट का एक्सप्रेशन होता है वो होता है I इक्वल्स टू एम एन टोटल EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस एन आर अपॉन एम के इक्वल. बट दे आर सेइंग कि हमें वैल्यूज ऑफ एन और एम निकालनी है कब? व्हेन करंट इज मैक्सिमम, एंड करंट मैक्सिमम होता है व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, दैट इज एन आर अपॉन एम के इक्वल होता है. सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव एम आर इक्वल्स टू एन इंटू आर. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज वी हैव R is 1.5 and small r is 0.5. So यहाँ से n कितना आ गया? Equals to 3m. Now using equation 2, in equation 1 we have, using equation 2 in 1 we have n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. We have m into 3m equals to 12. So we have m square equals to 4. So यहाँ से m कितना आ गया? Equals to 2. And इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. So we have n equals to 6. So these are the values for m and n. So this means कि कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2. एंड हर रो में कितने सेल्स कनेक्टेड हैं सीरीज में? इक्वल टू 6. सो टोटल सेल्स यहाँ से कितने आ गए? 12, और इतने ही गिवन है. सो ये टैली भी हो गया हमारा. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे. टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर. थैंक यू.